Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Here is the new topic in inheritance chapter, that is method overriding. In a previous lecture, we have discussed and declared the feature of inheritance, how we can inherit classes by using the word extend, and how we can call the superclass constructor by using the super keyword. And we have also discussed about the object class. Now in this lecture we are talking about method overriding. What is method overriding? Method overriding क्या है? Now let's see the definition first. If a derived or subclass has a method found within its base class or a superclass, that method will override the base class method. Okay, what does it mean? क्या मतलब हुआ इसका? आपके पास अगर डिराइव्ड क्लास यानी सब क्लास में एक मेथड है, ठीक है, और एग्जैक्टली उसी मेथड का जो नाम है उसका मैं उसी तरह का एक मेथड जो है वो बेस क्लास में भी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि जो चाइल्ड क्लास का मेथड है इट विल ओवरराइड द बेस क्लास मेथड. ठीक है. नाउ व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ इस बात का? अभी आप देखेंगे कि हाँ, इस ओवरराइडिंग का मतलब क्या है. The keyword super can be used to gain access to the superclass methods overridden by the base class. A subclass method must have the same return type as the corresponding superclass method. Okay, now here अभी हमने डेफिनेशन में कहा कि overriding of method mean कि if you are having a method in the subclass and with some name, and similarly method is also present in the base class, so the base class method is overridden by the derived class method. मतलब ये हुआ कि जब आपके पास अगर एक मेथड का जैसा नाम वाला मेथड बेस क्लास में भी मौजूद है और वो डिराइव्ड क्लास में भी है, तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसका? डिराइव्ड क्लास का, तो आपके पास जो मेथड होगा वो अपने ही क्लास में मौजूद जो मेथड है उसको कॉल करेगा. ठीक है. सुपर क्लास का मेथड जो है वो कॉल नहीं हो सकेगा क्योंकि डिराइव्ड क्लास के मेथड ने उसको ओवरराइड कर लिया है. ठीक है. ओके, द कीवर्ड सुपर कैन बी यूज. तो फिर आपके पास हम फिर सुपर क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे जब हर दफ़ा आपके पास डिराइव्ड क्लास का ही मेथड एक्सेस होगा. तो वेन एवर वी विल नीड अ सुपर क्लास मेथड, व्हाट विल वी डू? वी विल कॉल इट विद द सुपर कीवर्ड. हम सुपर कीवर्ड के ज़रिए उसका दोबारा जो एक्सेस है वो गेन कर सकते हैं, जो ओवर रिडन मेथड है उसका एक्सेस गेन कर सकते हैं. A subclass method must have the same return type as the corresponding super method. अच्छा, ये बात भी याद रखें कि आपके पास दोनों जो मेथड्स हैं उनका रिटर्न टाइप भी एक जैसा होना चाहिए. ठीक है. ओवररिडन में आपके पास दोनों जो मेथड्स हैं उनका रिटर्न टाइप भी सेम हो. अभी आपको एग्जांपल से अच्छे तरह से समझ आ जाएगी. नाउ हेयर लुक एट दिस एग्जांपल. Here is a class ABC, and in this class we are having a method void display. Now this display method, what does it do? It will print a message hello to the user on a output screen. Now here you see XYZ is the subclass which is extended by the ABC. So XYZ extends ABC. XYZ is the child class and ABC is the super class. Now you can see that in the subclass XYZ, here is also a method by the name display and its return type is void. Both the methods in superclass and subclass both have the same name display and both have the return type void, and both print a some message to the output screen, but the super methods print hello and the derived method print word, right? So now
इन अ मेन यू सी, अगर आप मेन में देखें, वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है किसका, डिराइव्ड क्लास का, एक्स वाई जेड. ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई इज द डिराइव्ड क्लास. नाउ यू विल सी दैट व्हेन वी विल कॉल दिस डिस्प्ले मेथड विद द ऑब्जेक्ट, so what will happen, it will simply call its own class method and you will get output word, राइट. आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वर्ड. यानी दोनों क्लासेस में एक ही नाम के मेथड्स हैं, लेकिन हमने चूंकि ऑब्जेक्ट किसका डिक्लेयर किया है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का, सब क्लास का है, ठीक है. तो आपके पास जो मैसेज आया है वो भी सब क्लास के मेथड का है, ठीक है. तो ये बात तो ठीक है. नाउ हेयर लुक एट दिस एग्ज़ाम्पल. अब अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें, ठीक है, और हम चाहते हैं कि भाई हम कॉल करें किसको, हम कॉल करें बेस क्लास के मेथड को. तो आप कैसे कॉल कर सकते हैं, आप वैसे करेंगे. हेयर इन द सेम एग्ज़ाम्पल आप थोड़ा सा देखिए कि आपने डिस्प्ले फंक्शन में थोड़ा सा चेंज लाना है. हेयर लुक एट दिस super dot display. Now what will happen, this call the display method of the super class. abc क्लास का जो डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल किया जा रहा है किस में, डिस्प्ले मेथड की बॉडी के अंदर. यानी हम जो सब क्लास एक्स वाई जेड है उसके डिस्प्ले मेथड में हमने सुपर कीवर्ड के साथ कॉल किया है डिस्प्ले मेथड base class का. Now here you will have the look at this, when you will declare the object of the subclass which is obj of type xyz. Now when you will call object dot display, you will get two messages, hello world. Now what is happened, actually हुआ क्या है आपके पास, जब हमने डिस्प्ले का मेथड ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, तो कंट्रोल इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द डिस्प्ले मेथड ऑफ द सब क्लास, ठीक है. और उसके अंदर फिर सुपर के साथ सुपर डॉट डिस्प्ले. नाउ अगर हम वैसे तो अगर हम एक क्लास के अंदर, एक मेथड के अंदर जब खुद उस मेथड को वापस कॉल करते हैं तो उसको रिकर्जन कहा जाता है. रिकर्जन से बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ लफ्ज़ सुपर लगा दिया, सुपर डॉट डिस्प्ले. सुपर डॉट डिस्प्ले से क्या होगा कि अब आपके पास ये जो डिस्प्ले मेथड है ए बी सी क्लास का उसको कॉल किया गया है, ठीक है. वहाँ आपके पास हेलो वर्ड है तो वो प्रिंट हो जाएगा, फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो आपके पास वर्ड, वर्ड जो है प्रिंट वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद कंट्रोल इज एग्जिटेड. ओके, सो दिस इज मेथड ओवरराइडिंग. द कॉन्सेप्ट इज नॉन एज, इसको हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग. वेन एवर यू आर हैविंग a method which is having a same name and same return type and that exists both in subclass and base class. So the object of the base class will call its own method. It will not call the superclass method. But if you are interested to call a superclass method, so you can call it by the reserved word super. You can call it with a super, right? So this was a all about the overriding. I hope you will understand, right? If you have any problem, you can ask me.